नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए बेटा, ए वीक का सिलेबस आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी अप टू सेल्स रहेगा बेटा, नो किरचॉफ लॉस, नो पोटेंशियोमीटर रहेगा एंड न्यूक्लियाई भी रहेगा बेटा, पूरा न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल जल्दी से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सेल का जो बेसिक प्रोसेस होता है बेटा, ये वाला रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव पॉजिटिव, उसके साथ एक रेसिस्टेंस होता है, यहाँ पर एक टर्मिनल, यहाँ पर एक टर्मिनल, ठीक है ना। ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय आर होता है बेसिकली, और ये हो गया इसका ईएमएफ, ये पूरा एक सेल कहलाता है बेसिकली, ये पूरा एक सेल है बेटा, ठीक है ना। आर इज योर व्हाट बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, आर इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर बैटरी, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, आर इज इक्वल्स टू योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर बैटरी। एंड ई क्या है बेटा यहाँ पर, ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ई इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, आई कैन से इट इज योर पोटेंशियल across the battery, across the battery when no current is flowing, when no current is flowing, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा, ई को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी when it is been, when no current is been flowing, ठीक है ना। इस कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, सेल। क्लियर है सभी को? चलिए अब पूछो बैटरी क्या है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और आई कैन से इट इज योर ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ योर सेल, इसमें देखो बेटा डेल्टा वी जो होता है ना, डेल्टा वी इज नोन एज राइट नाउ फॉर मी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझाता हूं मैं आपको, डोंट टेक, डेल्टा वी कहीं पर भी आ गया, दैट विल बी योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस योर बैटरी, अक्रॉस योर बैटरी, ठीक है ना, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। सो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज ऑफ योर बैटरी एंड डेल्टा वी रिप्रेजेंट्स मी व्हाट बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस योर बैटरी। देखो इसके अंदर अपने को दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक तो चार्जिंग, अनदर वन इज ऑफ योर डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ सेल। जैसे अपने पास चार्जिंग बैटरीज होते हैं, जैसे वॉच होती है, चार्जेबल वॉचेस होते हैं, फोन्स होते हैं, चार्जेबल होते हैं, इजंट इट। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ योर सेल्स, चार्ज करने के बाद अगर आप सेल यूज कर रहे हो बहुत देर के लिए तो डिस्चार्ज होते रहेगा। तो वैसे वाले सिचुएशन में हम लोग इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, पहला बात करते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। देखो इसका सिचुएशन देखो एक बार, डायग्राम डाल दो। मान के चलो मेरे पास एक सेल है इस तरह से, and it is their internal resistance उसके साथ ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक टर्मिनल है यहाँ पर पॉइंट ए, और यहाँ पर एक टर्मिनल है मान के चलो पॉइंट बी। इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर है, स्मॉल ई है, एंड यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा ना, यहाँ पर वी ए हो जाएगा और ये हो जाएगा वी बी, ठीक है। देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट राइट नाउ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से, isn't it? That means this is your positive terminal and this one is your negative terminal. So potential जब जा रहे हो basically, so potential at your A moving in the same direction. So this is discharging bit. यहाँ तो बाहर निकल रहा है basically. So when it is of discharging right now, I can write here. इसका EMF E है. So potential will be equal to your. यहाँ से discharge हो रहा है basically right now. So I can write that right now. Terminal potential difference. That means the potential of your A, if it is in the same direction, I'm going from A to B, opposite direction में जा रहे हो basically. So ये हो गया potential of your A. So going from A to B, opposite direction to the current flow हो रहा, तो opposite direction में जा रहे हैं तो plus current I into your R, जहां पर end हो रहे हैं वहां पर का टर्मिनल लेना, minus E will be equal to your potential of B,
ठीक है ना. So VA plus I into R minus E will be equal to this much. ठीक है ना. So ये this is right now positive, इधर चले जाएगा तो VB minus VA, VB minus of your VA. Done बेटा. So potential at your A is at your higher potential. So A at your higher potential, तो ये कितना हो जाएगा E minus of your I into R. ये पॉजिटिव इधर चले जाएगा तो बचने का नेगेटिव, यानी ये बन जाएगा VA minus of VB is equals to E minus IR, isn't it? That means this can be written as delta V. Delta V is equals to E minus I into R. तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्जिंग के लिए फॉर्मूला. डिस्चार्जिंग के लिए फॉर्मूला क्या हो गया E माइनस ऑफ I इंटू R. ठीक है ना. अब देखो चार्जिंग के लिए लिख रहा हूं मैं बेसिकली सेकंड वाला, यहाँ पर चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ योर बैटरी, मतलब दिस विल बी योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस विल बी नेगेटिव, यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया और ये हो गया सिचुएशन ऐसा कुछ. यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ ए और यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ बी. ये हो गया इसका इंटरनल रेसिस्टेंस बेटा यहाँ पर स्मॉल r, एंड दिस वन इज राइट नाउ EMF E, एंड वी आर गिविंग द करंट राइट नाउ लाइक दिस. ये एरो मार्क पे कंसंट्रेशन करिए. ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है ना. तो अगर इसमें डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो आई कैन राइट हियर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA. सेम डायरेक्शन में जा रहा है माइनस ऑफ योर I into R माइनस ऑफ योर E विल बी इक्वल टू VB. ठीक है ना. तो VA माइनस VB कितना बनेगा इसके लिए, VA माइनस ऑफ VB विल बी इक्वल टू योर डेल्टा V, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी E प्लस I into R. यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना बन गया, डेल्टा V इज इक्वल्स टू E प्लस ऑफ योर I into R. चार्जिंग में पॉजिटिव आ जाएगा, डिस्चार्जिंग में नेगेटिव आ जाएगा. क्लियर है सभी को. ये हो गया चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कॉम्बिनेशन, लिखने का तरीका. क्लियर है सभी को. एनी डाउट एनीवन इन दिस वन. आया बेटा. एवरीवन. ठीक है, एक एग्जांपल देके कराता हूं आपको. देखिए मान के चलो मेरे पास एक रेसिस्टेंस है यहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है विद नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है विद नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया पोटेंशियल्स, ये हो गया पोटेंशियल्स. दिस इज अ पॉइंट. तो ये हो गया 2 ohms और ये हो गया 5 volt और ये हो गया 1 ohm, ये हो गया 10 volt, ये हो गया 0.5 ohms, रफली ले रहा हूँ इसी. दिस विल बी योर 4 volt. ठीक है. तो अब मुझे बताइए इसमें E इक्विवेलेंट क्या होगा. E इक्विवेलेंट बताइए, E इक्विवेलेंट क्या होगा. यहाँ पर देखिए when there is a flow of a current right now, इसमें से कुछ जा रहा है बेसिकली, तो effectively if there is a flow of a current in this direction, some current जा रहा है मान के चलो आया, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. तो टोटल EMF विल गेट एड अप बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3. E1 की वैल्यू हो गई कितने 5, E2 की वैल्यू हो गई 10 प्लस ये हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 19 वोल्ट. आया सभी को. R इक्विवेलेंट बताइए कोई किसी को. R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू योर, दिस विल बी 2 प्लस 1 प्लस 0.5 and this will be equal to 3.5 ohms. आया सभी को. एनी डाउट. चल और एक क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से. मान के चलो मेरे पास एक रेसिस्टेंस है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, then again there is a battery, positive negative, and there is some resistance like this, then negative and positive, this is the terminals. ठीक है ना. इसमें अब EMF दे रखा है बेसिकली, मान के चलो this is some 5 volt, this is some 3 volt, this is some 8 volt. ठीक है ना. और इसका रेसिस्टेंस दे रखा है, मान के चलो सम रफली ले रहा हूँ, दिस इज से फॉर एग्जांपल 1 ohm, दिस वन इज लाइक से 2 ohms. चलिए बताइए इसमें क्या हो जाए. E इक्विवेलेंट बताइए कोई. E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, एंडिंग में जो हो रहा है वो वाला, यानी दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड प्लस 8,
that will be equal to how much better 10 volts. R equivalent कितना हो जाएगा? R equivalent will be equal to 1 plus 2, that will be equal to 3 volts. आ गया सभी को? Is it clear? Any doubt to anyone? चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, इसका करके बताइए बेटा आप लोग। मैं ऐसे स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको क्वेश्चन। ए करंट ऑफ 2 ampere is flowing through a cell, of EMF 5 volt and internal resistance 0.5 ohm from negative to positive electrode. If the potential of negative electrode, if the potential of negative electrode is 10 volt, the potential of positive electrode will be, चलो सोच समझ के बताइए आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन फॉर मी एज 5 volt, second option is given as 14 volt, third option is given as 15 volt, fourth option is given as 16 volt. First try to understand the question carefully. The current of 2 ampere is flowing through a cell of EMF कितना 5 volt and internal resistance कितना है 0.5 ohms from negative to positive electrode. If the potential of the negative electrode is 10 volt, the potential of the positive electrode will be equal to how much? चलिए करिए, पहले डायग्राम बनाइए। The current of 2 ampere is flowing through a cell, यानी पहले सेल होना है मेरे पास, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए पहले नेगेटिव लगा लेता हूं, फिर उसके बाद पॉजिटिव, ऐसा ठीक है ना। तो इस पे मैं पोटेंशियल ले रहा हूं एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इसके अंदर, I इज इक्वल टू कितना 2 amperes। पूरे सेल ऑफ इसका पोटेंशियल कितना है 5 volt, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 ohm from negative to positive. If the potential of the negative electrode is 10 volt, यानी यहाँ पर इसको मैं ले रहा हूँ मान के चलो सम 10 volt, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, ये मान के चलो VB है, तो VB इज इक्वल टू हाउ मच, ये VA है, VA इज इक्वल टू 10 volt, ये पोटेंशियल पॉइंट ये पे है। क्लियर है? सो नेगेटिव पॉजिटिव कोई करके बताएगा जल्दी से। फ्लो ऑफ करंट में जाना है बेटा, you are going from which direction, negative to your positive. Now there is a flow of current like this, and VB minus VA, higher potential, VB minus of VA will be equal to charging है कि discharging है, discharging है, यानी E minus of I into R। VB अपन को निकालना है, VA अपन को दे रखा है 10, EMF दे रखा है 5, माइनस करंट दे रखा है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5, so it is VB minus 10 is equals to 5 minus 0.5 into 2, ये कितना बन जाएगा 1, 5 minus 1, this will become 4, so potential VB will be equal to 4 plus 10, that will be equal to 14 volt, 14 volt will be the answer। आया सभी को? Am I clear with this question? Am I clear? स्टेटमेंट में दे रखा है, देखो क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी समझना भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? आया? चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई करें, आप लोग ट्राई करोगे, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो, एक रफ पेपर ले लेके जल्दी से। द इंटरनल रेजिस्टेंस of a 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere
0.2 ampere through a resistance of 10 ohms is. Options are 1.0 ohm, 0.2 ohm, 0.5 ohm, and 0.8 ohm. Okay. Read the question. The internal resistance of 2.1 volt cell which gives a current of 2 ampere through the resistance of 2 ohm. यानी एक सेल है मेरे पास, ये हो गया एक सेल, anything you can take, negative or positive with some resistance internal, is being connected to an external resistance. यहाँ पर एक external resistance लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना. So ये हो गया इसका 2.1 volt and there is a current of I is equals to 0.2 ampere, isn't it? And internal resistance of this cell यानी small r की वैल्यू मुझे नहीं पता, निकालना, और ये कैपिटल R है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 10 ohms. So this is the flow of a current type. So we are close to circuit है basically. So I can use the formula I is equals to total EMF by total resistance. I is equals to total EMF divided by total resistance. ठीक है ना. Total EMF कितना है बेटा, एक EMF है, that is nothing but 2.1 divided by R equivalent. R equivalent मतलब 10 plus small r. करंट कितना है 0.2 एम्पियर, तो 0.2 is equals to 0.2 is equals to 2.1 divided by 10 plus of your R, isn't it? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 मतलब कितना बेटा 2 by 10, 2 by 10 is equals to 2.1 divided by 10 plus R. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 into 10 plus R is equals to your 2.1 into your 10, ठीक है ना. तो कितना बन जाएगा 2 into 10 is 20 प्लस ये हो जाएगा 2R is equals 2.1 multiplied with the 10 will become 21, ठीक है ना. तो all the odd terms एक जगह ले लीजिए, यानी 2R will be equal to how much, 2R is equals to 21 minus 20, that will be equal to 1, यानी R is equals to 1 by 2, मतलब that will be equal to 0.5 ohms. So that will be the answer for this, 0.5 ohms. आई बात समझ में? Any problem to anyone? आ गया बेटा? एक ऐसे वाला क्वेश्चन और एक करोगे? चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करिए सभी लोग, ठीक है. रफ पेपर एंड क्वेश्चन को फ्रेम करते चले जाइए एंड ट्राई टू डू इट आउट. ए बैटरी हैज EMF of 4 volt and internal resistance R, and internal resistance is smaller. When this battery is connected to an external resistance of मान के चलिए some 2 ohms, comma a current of 1 ampere flows through the circuit, ठीक है. So now question is what current will flow if the terminals of the battery are connected directly, ठीक है ना. Options given for me are 1 ampere, second option is given as 2 ampere, 4 ampere, infinity. चलो ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एवरीवन. वी गॉट ए बैटरी ऑफ EF MEF कितना है बेटा 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कितना R, यानी एक बैटरी ड्रॉ कर रहा हूं मैं पहले, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलता है बेसिकली, पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पर एक इंटरनल बैटरी ऐसा ले रहा हूँ नेगेटिव ऐसा कुछ. इसका पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है स्मॉल r.
When this battery is connected to an external resistance of, चलिए इसको मैं external resistance से कनेक्ट कर रहा हूँ. This is Kepler. Kepler is equals to 2 ohm. A current of, तो इसमें करंट कितना बह रहा है बेटा? I is equals to 1 ampere flows through the circuit. What current will flow if the terminals of the battery are connected directly? यानी अब इसने क्या किया, यही सेल को नेगेटिव और पॉजिटिव को उसने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, रेसिस्टेंस निकाल देंगे. तो यहाँ पर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका निकालना पड़ेगा मुझे पहले, तो मुझे पता नहीं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है. तो वो क्या पूछ रहा है, व्हाट करंट विल फ्लो, तो इसके अंदर करंट कितना होगा, दिस करंट इज इक्वल्स टू हाउ मच, सेम बैटरी है 4 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे नहीं मालूम आर, तो इसको अभी निकालना है, इसमें करंट निकालना मतलब आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, स्मॉल आर निकालना है. तो पहले वाला डाटा में से मैं स्मॉल आर निकाल सकता हूँ. आई इज इक्वल्स टू योर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 4 वोल्ट का, आर इक्विवेलेंट कितना है, 2 प्लस आर, और आई कितना है बेटा 1 एम्पियर. चलो 1 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर. देखो कितना आसान है, समझने की कोशिश करना था खाली अपने, यानी 2 प्लस आर इज इक्वल्स टू 4 था, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम्स. तो स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 2 ओम्स, यानी ये 2 ओम्स को उठाओ और लेके जाके यहाँ डालो, यानी अब इसके अंदर करंट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, आई डैश विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. तो v की वैल्यू 4 है, कैपिटल आर तो नहीं है, निकाल दिए, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, यानी I dash will be equal to 4 divided by 2, 2 ones are 2 twos are, that will be equal to 2 amperes. So answer is 2 amperes. आई बात समझ में सभी को? Any doubt to anyone in this one? आ गया बेटा? Done? Sure. So I hope you got a rough idea related to your cells का concept जो अभी अपन ने किया था. ऑनलाइन में ज्यादा लोग नहीं दिख रहे बेटा, क्या हुआ? यहाँ से स्टार्ट किया ना. सेल किया आपने, बैटरी किया, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट किया, उस पर थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लिए. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेल्स हो गया. ठीक है ना बेटा? तो नेक्स्ट वन चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर.
concept of power. Power is nothing but equal to how much beta? P is equals to your I square into R. और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं V square divided by your R. Power is equals to your potential multiplied with your current time. Our work done divided by time. So P is equals to your I square into R, or it is your V square divided by your capital R. ठीक है ना? So P is equals to your V into I, या power is equals to I square into R, or that is equals to V square divided by R. ओम्स लॉ लगा रहा हूं मैं, बस ज्यादा कुछ नहीं, V is equals to I into R डाल दिया तो R स्क्वायर रेडियस में आ गया, और सॉरी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस आ गया. अगर करंट में नहीं चाहिए, पोटेंशियल में चाहिए, तो I की जगह आप V by R डाल दीजिए, इट इज V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ऊपर चले जाएगा V by R में आ जाएगा. ठीक है, चलो. इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट रिमेन्स सेम बेटा? इन सीरीज सर्क्यूट current is same. Current is same in resistors. Current is same in resistors. Now power P is equals to I square into your R. ठीक है, जैसा मान के चलो मेरे पास एक रेसिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है इस तरह से. This is connected to one battery, positive, negative, इस तरह से. ठीक है, दिस इज पोटेंशियल V, इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका रेजिस्टेंस हो गया R2, देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस मान के चलिए I. तो पावर P1 कितना हो जाएगा? फर्स्ट वन, पावर इज इक्वल्स टू योर करंट राइट नाउ ऑफ I इनटू योर R1, इजंट इट? सो I का स्क्वायर. P2 कितना हो जाएगा बेटा? P2 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस R2. एंड पावर का रेशियो अगर मैं पूछूं तो P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल्स टू I गेट्स कैंसिल, so it is R1 divided by R2. ये important है. In series combination, P1 by P2 is equals to your R1 by R2. So net power consumed कितना हो जाएगा इसके अंदर? So I can write here net power consumed. So P net is equals to I square into R equivalent. यानी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट. बस हो गई बात. ठीक है ना? सो P नेट इज इक्वल्स टू योर सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर करंट में दे रखा है तो I स्क्वायर इनटू R इक्विवेलेंट, पोटेंशियल विल बी सेम, तो इट विल बी R इक्विवेलेंट. ठीक है ना? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझाने की कोशिश करो. मान के चलो मेरे पास दो रेसिस्टर्स इस तरह से, यहाँ पर एक रेसिस्टर है और यहाँ पर एक रेसिस्टर, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज इन टर्न कनेक्टेड टू योर बैटरी ऑफ पोटेंशियल ऑफ योर हाउ मच? V वोल्ट. तो इसमें हो गया रेसिस्टेंस R1 और इसमें हो गया रेसिस्टेंस R2, और मान के चलो देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इसके अंदर. तो इसके अंदर हो गया पावर P1 और इसमें हो गया पावर P2. जरा सोच समझ के. P1 वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल विल रिमेन सेम, यानी V स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर P1 की वैल्यू लिख रहा हूं. सो P1 के लिए कितना हो जाएगा? चल के मैं यहाँ पर ही P1 कर लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. I'll make this one as of your P1. Sorry, this one I'll make it as of your P1 and this one I'll make it as of your P. ठीक है. So P1 is equals to V square divided by R1 लिख दूं. उसी तरह से P2 will be equal to your V square divided by R. तो P1 by P2 कितना हो जाएगा बेटा? P1 divided by P2 will be equal to इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, it is R2 divided by R1. सीरीज में डायरेक्टली था और पैरेलल में इनवर्सली आ रहा है. क्लियर? क्लियर है बेटा? सो नेट पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, सो इट इज P net is equals to your I into R equivalent, or it is V square divided by R equivalent. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बच्चे ओवरलुक करते हैं इसको. दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट जितना लिखाया जा रहा है उसको आप लोग ले लेके प्रॉब्लम्स कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ. सिर्फ PYQs कर लीजिए एम्स के और नीट के.
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पर मैक्सिमम पावर थियरम कंडीशन क्या है बेटा? पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, for maximum power transfer, I can write internal resistance must be equal to your R external. ये कंडीशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मस्ट बी इक्वल टू योर R इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। यानी अगर अपने पास एक रेसिस्टर है यहाँ पर कैपिटल R, दिस इज कनेक्टेड टू योर बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देयर इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ स्मॉल r, ठीक है ना, और ये इसका EMF है, तो स्मॉल r जो है ना कैपिटल R के बराबर होना चाहिए। सो यानी पी मैक्स कितना बन जाएगा बेटा? पी मैक्स याद रख लीजिए बेटा फॉर्मूला, पी मैक्स इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, और इट इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ योर R इक्विवेलेंट और R एक्सटर्नल। इसका डेरिवेशन पे मत जाइए वरना टाइम वेस्ट के सिवा कुछ नहीं होगा। तो जस्ट रिमेंबर द रिलेशन, P max will be equal to how much? P max is equals to E square divided by 4 times of small r लिख दो, या it is E square divided by 4 times of R times कैपिटल R के बराबर लिख दो, will be more than enough। क्लियर है बेटा? मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए कंडीशन क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और R इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट वन, रेटिंग ऑफ द बल्ब्स। रेटिंग ऑफ बल्ब, एक बल्ब को रेटिंग कैसे करते हैं आप? तो मान के चलो दिस इज सम बल्ब फॉर यू, और इसके अंदर कुछ तार है जैसा कुछ, दिस इज अ बल्ब, इजंट इट? मान के चलो इसका पोटेंशियल दे रखा है मैंने 220 वोल्ट और 100 वाट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर बेटा? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, ठीक है ना। सो 220 वोल्ट है और 100 वाट है, ठीक है ना। 220 ले लो या 200 ले लो, जैसा चाहिए आपकी मर्जी। कैलकुलेशन इजी होने के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 200 ही ले लेता हूँ। तो ये मान के चलो 200 वोल्ट है, वो LT वोल्ट, ठीक है ना। अगर मैं इसका रेसिस्टेंस पूछूं, इस फिलामेंट का रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, तो पावर का फॉर्मूला मेरे पास P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो रेसिस्टेंस बन गया मेरे पास V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, क्योंकि पोटेंशियल दे रखा है। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है बेटा? 200, ठीक है ना। सो दिस विल बी योर 200 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर, पावर कितना है? 100, isn't it? And this value will become how much for me? 2 square is 4, 4 into 10 to the power of 4 divided by 10 power 2, 10 power 2 और इसमें से 2 चले जाएगा, that is equals to 400 ohms। हो गई बात, आ गया। छोटे कुछ क्वेश्चन ही बनते हैं बेटा, ज्यादा डेप्थ में और जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे वाले ही रिलेशंस अपने को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, आराम से निकल जाए, ठीक है। इसमें मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपको अच्छी तरह से, बट पहले थोड़ा जल्दी से इसका कॉन्सेप्ट खत्म कर लें, देन विल ट्राई टू डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द हीट एंड पावर पार्ट ऑफ रिलेशन। देन हीट का कॉन्सेप्ट, जब करंट बहेगा तो वायर विल गेट हीटेड अप, आपने कभी देखा होगा, isn't it? सडन में अगर करंट बह रहा है, there will be a heat produced in the wire, so heat produced in the wire can be represented by H or Q, anything, so it is integral of your power into your dt from time t1 से लेके t2 तक, क्या वर्क डन मान के चलो, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ योर हीट, ठीक है ना। तो अगर मुझे पावर को लिखना है, इंटीग्रल ऑफ योर दिस वन इज t1, दिस वन इज t2, पावर इज इक्वल्स टू योर I स्क्वायर R into your dt, I स्क्वायर R into your dt, ठीक है। अगर करंट कांस्टेंट है मान के चलो, इफ करंट इज कांस्टेंट, इफ करंट इज कांस्टेंट, हाँ, if current is constant,
तो डायरेक्टली आप h को क्या कर सकते हैं, h इज इक्वल्स टू योर आई स्क्वायर r into your delta t. This will be the formula. h is equals to I square r into your delta t. ठीक है, so this is the formula for your heat. अगर पावर में दे दिया है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सीधा सीधा, नहीं अगर करंट और रेसिस्टेंस में दे रखा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा टी मतलब क्या बेटा, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ टाइम ऑफ योर T2 माइनस ऑफ योर T1, ठीक है। सो डेल्टा टी इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू योर T2 minus T1. T is your time here, not temperature. ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? Any doubt in this one to anyone? टेन मीटर, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए। इन इलेक्ट्रिक आयरन of resistance 20 ohms takes a current of 5 ampere. My question is, calculate the heat developed or the heat developed in 30 seconds. चलो ट्राई करें, anyone? तो देखिए ट्राई करिए। An electric iron of resistance at 20 ohm takes a current of 5 amperes. Calculate the heat developed in 30 seconds. Stop हो रहा है बस। Okay. Anyone? मान के चलो यहाँ से ऐसा करंट जा रहा है,
इस वायर के अंदर, और ये हीट प्रोड्यूस कर रही है, isn't it? तो अगर इसमें निकालना है मुझे तो क्या कांस्टेंट होगा बताइए बेटा? एन इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है मेरे पास, रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन फॉर मी इन द प्रॉब्लम, तो करंट भी कांस्टेंट जाएगा, तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी लगा दीजिए। आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 स्क्वायर करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? 20 ओम्स, कितने टाइम के लिए? 30 सेकंड्स के, यानी 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 20 इंटू 30, ठीक है ना? तो दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी हाउ मच बेटा? 1500 जॉल्स। तो ये बन गया मेरे पास, ये हो गया 15 इंटू 10 पावर 3 जॉल्स, यानी बन गया 15 किलो जॉल्स, सीधा सीधा, ठीक है ना? कितना सिंपल था ये, सुन रहे हो आप लोग? चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मान के चलिए 100 जॉल ऑफ हीट 100 joule of heat is produced each second in 4 ohm resistance. My question is find potential difference across resistor. Potential difference across resistor. Should I try again? See, always remember to take the expression whose values are given in the question better. Don't directly jump to the condition. अब मेरे पास क्या दे रखा है? हीट दे रखा है और रेसिस्टेंस दे रखा है, यानी H की वैल्यू दे रखा है मेरे पास 100 joules and रेसिस्टेंस दे रखा है मेरे पास 4 ohms. Is asking the potential difference, right? यानी V की वैल्यू कितनी है? प्रोड्यूस ईच सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है, टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टाइम इज इक्वल्स टू कितना? 1 सेकेंड। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है बेटा? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू योर आर इंटू टी। तो करंट नहीं है, पोटेंशियल दे रखा है, आई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू टी। तो ये स्क्वायर ये आर चले गया, तो हीट का फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो H दे रखा है 100 joules, that is equals to V square divided by R is 4 into time is 1. तो कितना बन जाएगा बेटा? 100 into 4 is equals to V square, ठीक है ना? तो this will be equal to 400 is equals to V square, यानी V की वैल्यू कितनी बन गई? 20 वोल्ट। That will be the answer. आ गया? And doubt to anyone? Done बेटा?
डन। चलो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है बेटा। ठीक है, चलो डू दिस क्वेश्चन बेटा। फाइंड एनर्जी dissipated in the resistor in 2 seconds. फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक रेसिस्टर है ऐसा कुछ, करंट इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 ohms. So try it. At what time? T is equals to 2 seconds. T is equals to 2 seconds के पास एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी का फॉर्मूला H is equals to I square R into T. तो I की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें? 3. So this is 3 square, resistance is 2 into time is, so that will be equal to how much? 3 square is 9, 2 into 2 4. 4 9s are 36 joules. This will be the answer. ठीक है ना? और एक क्वेश्चन करिए, थोड़ा डिफरेंट है इससे। मेरे पास रेसिस्टर है ऐसा कुछ, now current is given as a function of time, I is equals to 2t and resistance is मान के चलो 3 ohms. There is a flow of a current in this one. ठीक है, we need to calculate the current is variable बेटा, I is equals to 2t, that is variable, isn't it? Same, t is equals to 2 seconds के पास कितना दे रखा है? t is equals to 2 seconds. t is equals to 2 seconds. करंट कांस्टेंट नहीं है, अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन यूज करेंगे अपन, isn't it? So directly use the integration, यानी h will be equal to your integral of I square r into dt. ठीक है ना? लिमिट will be from where? 0 से लेके 2 seconds तक. So that is equals to integral I की वैल्यू क्या है? 2 into t का whole square into your r into your dt. So that is equals to integral of t square is how much for me बेटा? 2t. 2 बाहर आ जाएगा, that is nothing but 4. और इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच बेटा? इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? अरे बोलो भाई। दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 इंटू टी स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। तो 4 बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ योर टी स्क्वायर इंटू योर डी टी। ठीक है ना? रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 3 ohms, यानी 4 into 3 ये हो जाएगा 12. 12 into integral of t square into dt. Limit will be from 0 से लेके 2 seconds. Integral of t square into dt कितना होता है? याद है किसी को? इंटीग्रेशन 12. Integral of this one will become for me t cube divided by 3. Limits are 0 से लेके 2 तक. ठीक है ना? So this value will become how much for me? 12 divided by 3, upper limit minus lower limit, यानी 2 cube minus 0 cube. So that will be equal to 12 into 2 cube is 8 divided by 3. 3 1s are 3 4s are 12, 4 8s are 32 joules. So that will be the answer. Clear? As we go. Done बेटा? चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से देख लीजिए। An electric kettle takes 4 ampere of current at 220 volt. ठीक है? My question is, how much time will it take to boil 1 kg of water, 1 kg of water from temperature 20 degrees Celsius. Okay, क्या कर रहा है? How much time will it take to boil 1 kg of water from a temperature of 20 degrees Celsius? Boiling मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 100 degrees Celsius boiling temperature, isn't it? So 20 degrees Celsius, the temperature of boiling water कितना होता है बेटा? मैं लिख ले रहा हूँ,
the temperature of boiling water. Temperature of boiling water is 100 degrees Celsius. Options given for me are 12.6 minutes. Good question, Abita. Another one is 4.2 minutes. Third one is 6.3 minutes. And fourth one is 8.4 minutes. ठीक है ना? An electric kettle takes how much? 4 ampere of a current at 220 volt. How much time will it take to boil 1 kg of water to from temperature of 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius? And heat given by the kettle must be heat absorbed by the water. यानी जो H का फॉर्मूला है H is equals to I square R into your T का फॉर्मूला में ये जो H है ना I can take here as M into S into your delta theta that is equals to your I square R into your T. Delta theta is the temperature difference. करंट कितना दे रखा है प्रॉब्लम में करंट ऑफ 4 एम्पियर्स यानी ये हो गया 4 स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा हाउ मच टाइम विल इट टेक द रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है पोटेंशियल दे रखा है अपने को प्रॉब्लम में पोटेंशियल इज गिवन एज ऑफ योर 220 वोल्ट और करंट दे रखा है कितना 4 एम्पियर यानी फ्रॉम ओम्स लॉ V is equals to I into R I can write the resistance R is equals to V divided by I. V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा V की वैल्यू 220 divided by current is 4 यानी this will be 55 amperes sorry 55 ohms तो ये हो गया 55 into टाइम कितना निकालना है अपने को टाइम ही नहीं तो निकालना है ना हाउ मच टाइम विल इट टेक मास कितना है बेटा मेरे पास 1 kg into स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू ये देना चाहिए था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर BS और SW से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 4.2 joule per gram degree Celsius. Yeah, that will be equal to 4,200 joule per kg degree Celsius. This is a constant value. But specific heat of water is 4.2 joule. That should be given. Actually, मैंने दिखा नहीं है problem. तो जिसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4,200 into temperature difference कितना है 100 minus 20. ठीक है ना? तो ये हो गया अपना पास फॉर्मूला. तो अब इसको कर दीजिए. We'll get the answer for that. Specific heat of water is given in the problem बेटा मैंने लिखा नहीं था by mistake sorry तो ये हो गया 400 into this will be your 80 that will be equal to 4 square 16 into 55 into T ठीक है ना so T value will be equal to 4,200 into 80 divided by ये कितना बन जाएगा बेटा 16 into your 55 ठीक है ना तो ये 5 1 जा 5 11 जा ये हो जाएगा 5 8 जा isn't it so कितने में जाएगा देख लो जल्दी से सिंपलीफाई कर लो आ गया कितना आ रहा है